Hello everyone. We are now moving towards chemical properties of alkenes. So first property is combustion. All alkenes are highly combustible. They burn with luminous flame to give CO2 and water. So we will get two fixed product in combustion process of alkenes. The flame is become luminous because of its higher carbon content of alkenes comparison to that of alkanes. Alkene react with oxygen from air to give CO2, H2O and heat along with it. Since it is evolving as a product, combustion process is a exothermic process or exothermic reaction. Due to luminosity of the flame, lower alkenes may be used as illuminants. Illuminants means the substance which is used as a source of light. So, lower alkenes can be used as a source of light. Okay, so next property is oxidation reaction. And alkenes can be readily oxidized. Only one thing we have to keep in mind that the nature of product depend upon the oxidizing agent which is used in reaction. So let's take a look of this thing with the help of examples. We are taking three different oxidizing agents. First one is cold alkaline KMnO4. So cold alkaline KMnO4 when react with alkenes it will give dihydroxy compounds, that is diols or glycols. In this reaction KMnO4 get decolorized. Let's take a look of example. We have taken ethene which reacts with water and oxygen in the presence of cold alkaline KMnO4. It produces ethane 1,2-diol. This reaction is used as a test for unsaturation, that is to check the presence of double or triple bond in any molecule, and this test is called as Bayer's test. Okay, now we are looking towards second oxidizing agent which is acidified KMnO4 or K2Cr2O7, that is potassium dichromate, or first one was potassium permanganate. Okay, so whenever acidified potassium permanganate or potassium dichromate reacts with dihydroxy compound, they oxidizes them and produces keton or carboxylic acids. Let's take an example. Whenever ethene reacts with water and oxygen in the presence of acidified KMnO4, it produces ethane 1,2-diol, which again kept reacting with water and oxygen. It will produce methanol, which again kept reacting with oxygen, which will produce methanoic acid. Okay, so we are going to see the another example in which we are going to take 2-methylpropene which react with water and oxygen under the presence of acidified potassium permanganate. वो देगा अपने को 1,1-डायमिथाइल इथेन 1,2-डायोल. अगर उसकी रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करते रहते हैं तो वहाँ से अपने को मिलेंगे केटॉन और एक कार्बोक्सिलिक एसिड. केटॉन इज नेम्ड एज प्रोपेनॉन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड जो मिलेगा वो रहेगा मिथेनोइक एसिड. आगे फिर आपके लिए एक एग्जांपल है जिसमें प्रोपेन की रिएक्शन आपको लिखनी है. देन वी आर गोइंग टूवर्ड्स थर्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन विच रिएक्शन इज कॉल्ड एज हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन.
In this reaction, the oxidizing agent is diborane. When diborane adds to alkenes, it will give trialkyl borane, which is on oxidation gives alcohol. फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल रहते हैं प्रोपीन का, जिसकी रिएक्शन अपन ने कर दी डायबोरन के साथ, जिससे फिर आपके रिएक्शन में पहले आप देखोगे तो जहाँ पे डबल बॉन्ड है वहाँ पे बॉन्ड ब्रेक होकर बोरॉन ऐड हो गया है. बोरॉन एडिशन के बाद वहीं पर कार्बोकैटायन फॉर्मेशन हुआ है, और कार्बन कैटायन फॉर्मेशन होने के बाद वापस फिर BH का मॉलिक्यूल ऐड हुआ है. दिस प्रोसेस विल कीप ऑन कंटिन्यूइंग लाइक दिस until two compounds are formed. First one is propanol and another is boric acid. जो कोई भी रिएक्शन आपने बनाई है वो बराबर है या नहीं, आप यहाँ से चेक कर सकते हो. Now we are moving towards next chemical property, that is polymerization. So alkenes undergo addition polymerization. जब कभी भी alkenes को अंडर प्रेशर हीट किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ सुटेबल कैटलिस्ट, देन दे अंडरगो एडिशन पॉलीमराइजेशन. अब देखते एडिशन, व्हाट इज मीन बाय एडिशन पॉलीमराइजेशन. सो एडिशन पॉलीमराइजेशन इज नथिंग बट द प्रोसेस बाय विच large number of molecules of same species join together to form giant molecule, which is called as polymer. फॉर एग्जांपल लेते हैं कि अपन इथिन लिया, जिसको मैंने 1000 डिग्री सेल्सियस पे अगर हीट करते हैं अंडर 100 में एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, देन वी विल गेट पॉलीइथिन. जनरल रिएक्शन वो कुछ इस तरीके से रहेंगी. एज इथिन under the presence of oxygen and pressure conditions we will get polyethylene. For example अगर देखना है तो if we take vinyl chloride in the presence of peroxide catalyst, it will get polymerized and it form PVC. So we can expect that this reaction is used in the preparation of PVC pipes. Another important reaction is of Teflon, which is a polymer of tetrafluoroethene. Its reaction is NCF2 double bond with CF2. On polymerization it will give Teflon. So next chemical property is isomerization. Whenever alkenes get heated alone at high temperature, which is around 500 to 700 degrees Celsius, or at lower temperature, that is 200 to 300 degrees Celsius, in the presence of catalyst like Al2SO4 thrice, aluminium sulfate, then alkenes get isomerized. दो उनके मेथड्स है जिसके हेल्प से वो आइसोमराइज होते हैं. फर्स्ट रीजन है बाय शिफ्टिंग आउट डबल बॉन्ड विच टेंड्स टू मूव टूवर्ड्स सेंटर ऑफ चेन. फॉर एग्जांपल अगर देखेंगे कि पेंट 1 इन है तो उसमें जो डबल बॉन्ड है वो सेंटर की तरफ शिफ्ट हो गया है और बन गया है पेंट 2 इन. ये एक फर्स्ट रीज़न हो गया आइसोमराइजेशन होने का. और सेकंड जो है माइग्रेशन ऑफ CH3 ग्रुप, दैट इज मिथाइल ग्रुप. अनदर वी हैव टेकन द एग्जांपल ब्यूट 1 इन converted to 2-methyl propane, in which CH3 shifted to another place.